Welcome everyone to another video. Today we are gonna be talking about what should be your first investment. But before we get into that, let's just know how can we invest in the stock market, right? Because we haven't really talked about it yet. So basically, to invest in stock market, you need a demat account. Now to make a demat account, there are numerous ways to make a demat account, but the easiest way to do it is through using a brokerage app. Now there are a lot of apps, Zerodha, Upstocks, and a lot of them. I personally use Grow. This isn't a sponsored post. I'm just gonna recommend you guys what I use and I find simple to use. So yeah, I use Grow. I prefer it because it doesn't have any opening charges like most of the apps have, like opening charges, maintenance charges and a lot of charges. ऐसे free के पैसे थोड़ी आ रहे जो हम तुम्हें दे देंगे. तो yeah, Grow is basically free in that scenario. So yeah, that's why I prefer using it. If you guys want to use that as well, you can use the link in the description. It's my referral link. Again, it's not sponsored, but if you use that link, we both will get some rewards. I don't know how that works yet, but yeah, something is better than nothing, right? What's the point of you downloading the app from the Play Store if we both could benefit if you download from my link? Basically, there's no losing in it. So yeah, you can download the Grow app in the description below and start your investment journey today. Alright, so to make a demat account, you need Aadhaar card, PAN card and your Gmail ID. That's all, and maybe your phone number if I remember correctly. So once you do all that, you have a demat account, right? Now you can start your investment journey. But what should be your first investment? Now this is very important, right? Because कुछ लोगों को लगता है चलो हमको इन्वेस्ट करना है, सारे पैसे डॉज कॉइन में डाल देते हैं. No, you shouldn't do that because that's not called investment, that's called gambling. तुम गोवा में जाके भी गैम्बल कर सकते हो, तुम्हें फ़ोन से गैम्बल करने की ज़रूरत नहीं है. Yeah, so but investment is something greater than that. Do you know how billionaires remain billionaires? They invest their money. You can't earn this much money, this billions and billions of money. You can't really earn that by doing a job. You earn that through investments. So yeah, what should be your first investment? It should be drum rolls, index funds. So what is index fund, right? That's what I hear you asking. You weren't asking that, but I'm just gonna assume that you were. So index fund basically is an index of some collected stocks, right? In a stock market there are more than 5,000 companies, है ना? 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है. अब हम खुद अपना दिमाग लगाएं, सारी एक एक कंपनी सेलेक्ट करें कि अच्छा ये अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर जाएगा, बहुत सारी रिसर्च जाएगी, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा. इससे अच्छा क्या होता है, एक इंडेक्स को चूज़ कर ले. देयर आर टू मोस्ट फेमस इंडेक्सेस. वन इज़ निफ्टी 50 एंड वन इज़ सेंसेक्स 30, राइट? सो इफ़ यू पुट योर मनी इन निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट, it basically, whatever money you put in that index, it will invest it in top 50 companies of India. Top 50 companies, right? You don't have to think anything, you don't have to research about anything. It will just automatically put your money in the top 50 companies of India. This is why I love index funds so much, because you don't have to do anything. You just have to put your money in it and it will do all the research, everything for you. And you just have to sit there, relax and watch Netflix for all you care. You literally don't have to do anything, right? So yeah, that's how it works. Now, how do you invest in index fund? Well, I personally invest in UTI Nifty 50 index fund, right? This is again not a I'm not sponsored, not recommending anything. It's just what I find simple and easy to use. So I do that. So all you have to do is like open a demat account through Grow app using my link in the description, right? You make a demat account, you search in Grow app निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, राइट? सबसे पहले वही आएगा UTI निफ्टी 50 जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है. बिकॉज लाइक आई थिंक दो ही हैं, एक HDFC का सेंसेक्स 30 है. नाउ सेंसेक्स 30 इज़ लाइक वो टॉप 30 कंपनीज़ में डालता है, निफ्टी 50 टॉप 50 में. आई प्रेफर टॉप 50 क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है. इट्स फॉर अनदर वीडियो एंड एवरीथिंग, बट या निफ्टी 50 इज़ बेटर इन माई ओपिनियन. सो अब देखो, जैसे तुमने वो खोल लिया UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यू ओपनड इट. Now you have two options. Either you can invest in lump sum and or SIP.
नाउ व्हाट हैपेंस इन लम सम इज कि तुम एक साथ सारे पैसे डाल देते हो एक ही दिन में, राइट, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि यू हैव पुट योर मनी इन और तुम्हें नहीं पता कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाना पड़ा है. बट व्हेन यू पुट योर मनी इन SIP मोड, इट्स लाइक हर महीने यू विल सेलेक्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड इट विल डिडक्ट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली, ठीक है, एंड इट विल गेट इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट. सो बेसिकली जैसे अब मेरी SIP है 2500 रुपये की, राइट. सो एवरी मंथ UTI जो करता है ना, जो मतलब UTI कंपनी है, वो मेरे बैंक से 2500 रुपये निकालता है अपने आप. मेरे को कुछ नहीं करना इसमें, मेरे को कुछ नहीं करना. वो अपने आप पैसे निकालता है, सीधा अपने फंड में डालता है एंड देन दे पुट इट इन द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया. मुझे कुछ करना ही नहीं है. मैं तो बस स्टार्टिंग में एक बार सेटअप कर दिया, अपनी बैंक डिटेल्स दे दी, अपना पैन कार्ड दे दिया एंड ऑल दैट शिट, ठीक है. ये सब हमने कर दिया. अब उन पे पूरी जिम्मेदारी है एंड दे आर वेरी सिक्योर्ड एंड ट्रस्टेड ऐप. गवर्नमेंट पूरा ये रूल करती है, तो दे कांट एवर स्कैम यू, सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट. सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड टू इन्वेस्ट थ्रू SIP मोड. क्योंकि अब जैसे मार्केट कभी भी सीधा ऊपर ही जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर बहुत ऊपर जाता है. हमेशा ऐसे ही होता है. द हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज डन दैट. अब जैसे तुम लमसम में अगर डाल दोगे, एक ही बारी में सारा अमाउंट अपना डाल दोगे, राइट, तो वो जब ऊपर है ना, जैसे यूँ ऊपर गया और तुमने ऊपर में डाल दिया, फिर थोड़ा सा नीचे भी आएगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा, पर जब नीचे आया तो तुम्हारा थोड़ा सा परसेंटेज में डिफरेंस आ जाता है रिटर्न में. बट इफ़ यू पुट इन SIP मोड, हर महीने डाल लो, तो ऊपर में भी डालेगा, नीचे में भी डालेगा, फिर वापस ऊपर में भी डालेगा, फिर वापस नीचे में डालेगा, तो तुम्हारा एवरेज आउट हो जाएगा. बेसिकली दैट्स द बेनिफिट. सो जैसे मैंने बोला कि मैं 2500 डालता हूँ हर महीने उस वाले फंड में, राइट, तो यू कैन ऑल्सो पुट लाइक 12,000 सीधा ही तुमने एक ही बारी में डाल दिया, ताकि तुम्हें पूरे साल बार बार ना कटते रहे तुम्हारे बैंक से. तो हमने ये कर दिया. बट अगेन दैट्स नॉट व्हाट आई वुड रिकमेंड, बट यू कैन ऑल्सो डू दैट. ऑल्सो यू डोंट हैव टू पुट 2500, you can just start with 500. But yeah, that's just what I do. I just told you what I do. Just make a SIP and सब कुछ अपने आप होता रहेगा, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. And that is basically how you start your investment journey with index funds. सबसे easy way है, सबसे ट्रस्टेड वे है. यू कांट गो रॉन्ग विथ इट. अब तक जब से भी स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट, हर साल को मिला के हर साल वो 15% से ज़्यादा ही रिटर्न देता है ना. जैसे पिछले साल उसने दिए थे 50% कुछ रिटर्न्स. बेसिकली इट्स लाइक अ रियली गुड थिंग. इट्स लाइक अ वेरी ईजी थिंग. इट्स लाइक वेरी सेफ थिंग, वेरी सिंपल थिंग फॉर बिगिनर्स. आई एम नॉट अ बिगिनर, बट आई स्टिल यूज इट बिकॉज इट्स लाइक वेरी सिंपल एंड वेरी कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट. सो या, दैट्स बेसिकली इट. If you don't have a Demat account, make it with Grow app. Again, not sponsored. I just find it very easy and, as I said, free to use. And if you use my referral code, we might get some reward. Yeah, you can do that. Use my referral link. Start your investment journey. Start it with index funds. You can use the Nifty 50 fund, or there's another one, HDFC Sensex 30, which chooses top 30 companies. It's your choice. It doesn't matter. Both are pretty much same. And yeah, that's basically it. As I said, you can never go wrong with index funds. Always remember that. It's the best thing that has ever been created for beginners like you and me. So yeah, that's all you need to know about how to start your investment journey. This is what your first investment should be, in my opinion. Many people will say otherwise, but yeah, and that's basically it. Thank you so much for watching, everybody. Best of luck. Make sure to like, comment and subscribe. And अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आया हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो. And if I somehow am not able to, you can just follow me on Instagram and DM me there. Whatever you need to ask, you can ask me there. So yeah, use my referral code in the description below, and peace.